आज का मेरा टॉपिक चेंज मैनेजमेंट के हवाले से है। मैनेजमेंट में तब्दीली या मैनेजमेंट की तब्दीली। कंटेंट चेंजिंग मैनेजमेंट, द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन चेंज इनिशिएटिव्स। चेंज इनिशिएटिव्स के अंदर कम्युनिकेशन का क्या किरदार है। 3 लेवल ऑफ चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट के 3 लेवल्स कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट के कामयाब फैक्टर्स कौन से हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लीडिंग चेंज मैनेजमेंट। लीडिंग चेंज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन से हैं। व्हाट इज चेंज। सबसे पहले तब्दीली के बारे में बताऊंगा मैं आपको। चेंज इज ए प्रोसेस। चेंज तब्दीली एक तरीकाकार है टू मेक दी फॉर्म, एक फॉर्म बनाने का, शक्ल बनाने का, नेचर, फितरत, कंटेंट, फ्यूचर, कोर्स ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज और व्हाट इट वुड बी इफ लेफ्ट अलोन। व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है। द फंक्शन दैट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ पीपल टू अकॉम्प्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। द फंक्शंस वो तमाम फंक्शंस जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं द एफर्ट्स ऑफ पीपल, लोगों की कोशिशों को अकॉम्प्लिश करते हैं और उससे गोल और ऑब्जेक्टिव, मकासद उससे हासिल किए जाते हैं। यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्लानिंग मैनेजमेंट में क्या चीज़ आ जाती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। चेंज मैनेजमेंट, पहले चेंज के बारे में बताया, फिर मैनेजमेंट के बारे में। आप चेंज मैनेजमेंट को मिला के पढ़ेंगे। चेंज मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन, ये वो डिसिप्लिन है, ये वो शुबा है दैट गाइड हाउ वी प्रिपेयर, जो कि हमारी रहनुमाई करता है कैसे हम तैयार करते हैं, इक्विप करते हैं एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स, और हर एक की मदद करते हैं टू सक्सेसफुली अडॉप्ट चेंज इन ऑर्डर टू ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड आउटकम्स। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और आउटकम्स को हासिल करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट हैज टिपिकली बीन डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग वैल्यूज, practices and procedures within organizations. Quote LEWIN'S change management model। ये हमारे पास LEWIN'S change management model है। सबसे पहले हमारे पास एक अनफ्रीज एटम है, उसके ऊपर हम चेंज करते हैं, तब्दीली लाते हैं, तो वो किस में आ जाता है, अनफ्रीज में आ जाता है। कोट्स LEWIN'S change management model। अनफ्रीजिंग, प्रिपेयरिंग टू एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ चेंज, तैयार करना लोगों को कि वो जो तब्दीली हम कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट करें। डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ओल्ड वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर्स, डिसकन्फर्मिंग डेटा, जो हमारे पास ओल्ड वैल्यू आ रही थी, एटीट्यूड आ रहा था, बिहेवियर रवैया आ रहा था, उसकी वैल्यू जो है उसको स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को कम करना है। चेंजिंग, फैसिलिटेशन एंड ट्रेनिंग टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस, developing new attitude and behavior। Freezing, refreezing, institutionalize and stabilize, reinforce the change through new norms, supporting mechanism and SOPs, standard operating procedures. The goal of change is to improve। When you introduce a change to the organization, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप तब्दीली लाते हैं, you are ultimately going to be impacting one or more of the following parts of how the organization operates। प्रोसेसेस को चेंज कर रहे होते हैं, सिस्टम्स को चेंज कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रहे होते हैं और जॉब रूल को चेंज कर रहे होते हैं। 2 key disciplines required to bring a change to life। 2 अहम डिसिप्लिन्स हैं जो कि जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, skills, tools and techniques to project activities to meet project requirement। चेंज मैनेजमेंट क्या है, इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, टूल्स
and techniques to manage the people side of change to achieve the required business outcome. The role of communication in change initiatives. Communication क्या है? Communication is a key to developing change initiatives and implementing them. Communication can serve many functions during change initiatives. Communication बहुत सारे काम करती है जब हम इनिशिएटिव्स चेंज के जो इनिशिएटिव है वो लाते हैं. इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, पार्टिसिपेशन होती है लोगों की, कन्वे दी विजन, जो विजन होता है वो कन्वे होता है, आगे मुंतकिल होता है, सोशल सपोर्ट आती है. The role of communication in change initiative. Input can be gained through a variety of processes. जो input है वो gain करते हैं हम बहुत सारे processes से, बहुत सारे तरीकों से. Use informal network and knowledge of key holders. Disseminate information, manage the style and content of communication, create and communicate vision. Level of change management. There are 3 levels of change management. Individual change management. चेंज मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं. इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट है, इंटरप्राइज चेंज मैनेजमेंट कैपेबिलिटी. मैनेजिंग द चेंज को हम कैसे, तब्दीली को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. चेंज मैनेजमेंट इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एंट्री लेवल टू टॉप मैनेजमेंट. चेंज मैनेजमेंट जो है एक कॉर्पोरेशन है जिसमें तमाम एम्प्लॉय शामिल होते हैं शुरुआती लेवल से टॉप मैनेजमेंट तक. इफेक्टिवली मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज ए 4 स्टेप. इफेक्टिवली जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होती है उसके 4 स्टेप हैं. रिकॉग्नाइजिंग दी चेंजेस, तब्दीली को रिकॉग्नाइज करना. डेवलपिंग दी नेसेसरी एडजस्टमेंट. Training their employees, winning the support of employees. Factors of successful change management. Define measurable stakeholders' aims and create a business case for their achievement, which should be continuously updated. Monitors assumptions, risk, dependence, cost, return on investment, disbenefits and cultural issues. Effective communication that informs various stakeholders of the reason for the change, the benefits of the successful implementation as well as the detail of the change. Devise and factors of successful change management. Devise an effective education, training and or skills upgrading scheme for the organization. Counter resistance from the employees of companies and align them to overall strategic direction of the organization. Provide personal counseling if required to alleviate any change related fear. Monitoring PF the implementation and fine tuning as required. How to lead change. 3 simple steps. चेंज को, तब्दीली को हम कैसे लीड कर सकते हैं उसके 3 आसान स्टेप हैं, सादा स्टेप हैं. पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर चेंज, लीडिंग चेंज मैनेजमेंट, मैनेजिंग चेंज. आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर चेंज. सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, निशानदेही करें कि तब्दीली की ज़रूरत क्यों पड़ी. द नीड फॉर चेंज एग्जिस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तब्दीली जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ज़रूरी समझा जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आती रहती है. The risk can be taken out of the change agenda by simply focusing on 3 areas. Current customers, what needs to change to better serve your customers. Potential customers, what need to change to profitably create customers. Corporate culture, what changes need to occur to better serve your workforce and empower their resources such that they can better influence atoms 1 and 2 above. Leading change. You cannot effectively lead change without understanding the landscape of the change. There are 4 typical responses to change. The victim, those who view change as a personal attack on their
persona, their role, their job, or their area of responsibility. The natural bystander, this group is neither for nor against change. The critic. The critic opposes any and all changes. Keep in mind, not all the critics are overt in their resistance. Many critics remain in stealth mode, trying to derail change behind the scene by using their influence on others. The advocate. The advocate not only embraces change, they will in change initiatives. Like the critics, it is important to identify the advocates early in the process to not only behind the power base for changing but to give momentum to change initiatives. Managing the change. Managing change requires key players have control over four critical elements: vision, alignment, those that understand and agree with your vision must be leveraged in the change process. Those who disagree must be converted or have their influence neutralized. Managing change responsibility. Your change agent must have a sufficient level of responsibility to achieve the necessary results. Accountability. Your change agent must be accountable for reaching their objectives. Authority. If the first three items are in place, yet your change agent have not been given the needed authority to get the job done, the first three items do not mean match. Cooter's model of change management. 8 steps to successful change. John Cooter. Institutionalize the change, consolidate and build on the gains, create short-term wins, empower people to act on the vision, communicate the vision, develop a clear shared vision, create a guiding coalition, establish a scene of urgency. Cooter's model of change management increase urgency. Raising a feeling of urgency is the first and most critical step in a successful change effort. With low urgency and complacency, the change effort cannot get off the ground. Begin with the end in mind. Cooter's model of change management. Number 2, build the guiding team. It is important to get the right people in place who are fully committed to change the initiative, well respected within the organization, and have their power and influence to drive the change effort at their level. Get the vision right shared. While creating a shared need and urgency for change may push people into action, it is the vision that will steer them into the new direction. Number 4, communicate for buy-in. Once a vision and strategy have been developed, they must be communicated to organization in order to gain understanding and buy-in. Sending clear, credible and heartfelt messages about the direction of change establishes genuine gut level buy-in, which sets the stage for the following step: getting people to act. Empower action. Empowering action should be seen as removing barriers to those whom we want to assist in pushing the change effort. Removing obstacles should inspire, promote optimism and build confidence around the change effort. Create short-term wins. Short-term wins nourish faith in the change effort, emotionally reward the hard worker, keep the critics at bay and build momentum by creating short-term wins and being honest with feedback. Progress is achieved and people are inspired. Number 7, do not let up. In successful efforts, people build on this momentum to make the vision a reality by keeping urgency up, eliminating unnecessary, exhausting work, and not declaring victory prematurely. Make change stick.
By creating a new sportive and sufficiently strong organizational culture, the change should remain a sportive culture provides roots for the new ways of operating. Principles of leading change management. The following list of 10 guiding principles for change can help executives navigate the shoals of transformation in a systematic way. Lead the culture, start at top, involve every layer, make the rational and emotional case together. Principles of leading change management. Act your way into new thinking. 6. Engage. 7. Lead outside the line. Pride builders, trusted nodes, change are cultural ambassadors. Number 8. Leverage formal solutions, leverage informal solutions. Number 10. Assess and adopt. Principles of leading change management. These 10 guiding principles offer a powerful template for leaders committed to effecting sustained transformational change. The work required can be arduous and exacting, but the need for change initiative is only going to become more urgent. It behaves